ओके, ठीक है. यस, मिस राखी. Yes, sir. राखी, एट्थ एंड नाइन्थ वीडियो आपने देख लिया? Yes, sir. ओके, सो डू वी नो व्हाट इज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड? Yes, sir. ओके, व्हाट इज इट? सर जो एक्चुअल में रिसीव नहीं है बट उसको सपोज कर लिया, मान लिया. अच्छा, और किस सेक्शन में पढ़ते हैं हम? यस सर. सेक्शन क्या होता है इसका? सर सेक्शन 7. ओके, सेक्शन 7. ओके, गुड, वेरी गुड. यस, यस, मिस दिविशा गोयल. Yes, sir. यस, दिविशा, व्हाट इज इंडियन इनकम? Sir, it is the income which is either received or deemed to be received or accrue and arise or deemed to be accrue and arise in India. Okay, and what is a foreign income? Sir, just opposite, which is not deemed to be Indian received income. or received or accrue and arise or deemed to be accrue or arise, which is not मतलब सब में not लग जाएगा बस. Okay, so can we directly say this? The income which is not an Indian income is a foreign income? Yes sir, but आपने वो बोलने को मना किया था पिछली क्लास में. अच्छा, ठीक है. Okay, fine, good. Yes, Riti? No, she has just left the meeting because I'm asking the questions. कोई No, बात नहीं. sir, there was network issue. Okay, you are there in the class, Miss Riti. Ye- yes, sir, I was there. There was network issue. Yes. Okay, so do we know what is the residential status of a company? Yes, sir, I have studied. Yes. Okay, what is it? Residential status of a company. Company is said to be the resident in India in any previous year if it is an Indian company or Mhm. if its place of effective management at any time in that year is in India. Okay, can you tell me? Okay, just a minute. Yes, Shantanu. Yes, sir. Shantanu, do we know what is the point of effective management? Yes, Shantanu. अच्छा, आपको बैकग्राउंड में गानों की आवाज तो नहीं आ रही है ना? आ रही No, है? अच्छा, एक सेकंड, मुझे बहुत आ रही है. जस्ट अ मिनट. Okay, yes, Shantanu. No idea? Yes, Maninder Sharma. यस सर. हाँ जी, पॉइंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? सर कंपनी के केस में हम्म. सर उसका जहाँ से हम्म. सर हेडक्वार्टर जैसे कह सकते हैं, सेंटर. ओके, ठीक है. कंपनी जहाँ से स्टैब्लिश शुरू हुई थी, जिस कंट्री से. ओके, फाइन, गुड. यस, सुकृति काला. Is she there in the class, Sukriti? Yes, Sukriti, are you there in the class? Okay, fine. मुस्कान जैन. Yes, sir. हाँ जी, बच्चे पता है आपको? So basically, place of effective management is the place where key decisions of a company are being taken place. Okay.
decisions of the companies are taken place. What kind of the decisions are taken place in the company? I mean, what kind? Major decisions like basically the main controlling decisions of the company. Okay, fine. And how it is different from the control and management? So I don't know. Okay, anyone who would like to answer this question? Okay, Indu Sharma. Indu, आप बताइए. Self control and management is the place from where the Hindu undivided family decisions are taken. Doesn't matter the Hindu undivided family members or Karta be at place or at that place or not. But the effective management means in case of company, the major commercial decisions that are necessary for the entity existence are taken place. Very good. But Hindu, not only in case of Hindu undivided family, we see the control and management, but we also see in case of Yes, yes, association yes. of person, Association, BOI. yes. Right, right. That's the difference between the control and management, the point of effective management of the company. Right. Okay, Lavanya. Yes, sir. Acha, have you seen the 10th video because you asked for the recording, right? Yes, sir. Okay, देख लिया आपने? ठीक है. Okay, fine. No issue. Just a minute. अच्छा, did I share my screen also? नो सर, अभी आपने नहीं करी. अच्छा, एक सेकंड बस. No. And there are total 7 students, those who left the class in between when I was asking the questions. You people are doing it repeatedly. या तो आप मुझे पागल समझते हो या अपने आप को. दो ही केसेस हो सकते हैं. I have already told you this. I'm not going to tolerate it any further. If I'm asking the question, I just want to know whether you people are actually studying or not. There's no Yes, benefit sir. of it. Not in my class. और इस बार एक हफ्ते तक किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिलेगी जो भी स्टूडेंट इसमें मेंशन है. And seriously, I'm not going to give the entries to those students. Why do people take it like that? What we are doing here? I mean, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है. इफ आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मेरे स्टूडेंट को साथ के साथ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कीप ऑन चेक कि कितने स्टूडेंट्स के पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने देखी नहीं दी. व्हेन आई कॉल द स्टूडेंट एंड आस्क कि आपने रिकॉर्डिंग देख ली है, समझ आया है नहीं आया, I need not to put those efforts because I might not be that serious about your study. Why should I? First thing, if I'm asking something you, it means that it should be in your benefit, and it is actually in your benefit. Okay. Anyways, तो ओके, अब वो कोई बात नहीं. वो अगर किसी ने क्लास ज्वाइन नहीं की है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. आई एम आस्किंग अबाउट दोज स्टूडेंट दोज हु लेफ्ट द क्लास व्हेनेवर आई start the question answer process. And this time I'm very very serious about this. मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आप 80 बच्चे क्लास में आते हैं, 60 बच्चे आते हैं. मुझे इससे मतलब है कि आप अगर हर कोई क्लास में आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्लास में समझने के लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं. मेरी क्लास में आप ये सब तो नहीं कर सकते, ना ही मैं अलाउ करूँगा कि आप मेरी क्लास में कैजुअल अप्रोच के साथ आए. And there is one more news. By the end of this month, I'm going to take your first fiver in obviously in slots. तो आपका सैलरी चैप्टर तक आपका वाइवा होगा, तो मेक श्योर कि आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने वाइवा के लिए. एंड दिस विल बी द फर्स्ट वाइवा. ठीक है? Yes, sir. फाइन. ओके, द लास्ट थिंग. हाँ जी, बोलिए प्रथम. सर एक क्वेश्चन था. एक आपने जो कल क्वेश्चन दिए थे उसमें से एक टॉपिक था, शायद मुझे पता नहीं वो अभी हुआ इस क्लास में. ओके, हाँ, क्या टॉपिक था बताइए. सर एक मेंस का क्वेश्चन था, आईएएस मेंस का. हाँ, बोलिए. एक सेकंड लीजिए सर, मैं निकाल लूँ.
ओके, मुझे भी देखना और पड़ेगा अभी क्वेश्चन। टैक्स लैब्स भी करने हैं ना अभी। तो वो हाँ सर, स्लैब्स टैक्स वाला लैब्स का ही क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन था था। वो। अच्छा, टेक्स्ट लैब से था वो क्वेश्चन। हाँ जी सर। यस सर। ऐसे हो बहुत सकता सारे है। थे आई थिंक। एक तो Like- एग्जैक्ट अमाउंट का था। like excess total income for the assessment year is 8 lakh rupees. This tax liability shall be if his age is 51 years. ओके, तो amount का question था कोई and बात नहीं, वी कैन लीव दोस क्वेश्चन। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस बिकॉज़ द क्वेश्चंस वर इन सीक्वेंस, सो आई कुड नॉट क्रॉप द क्वेश्चंस। तो जो आपके क्वेश्चंस थे वो ही आपको देखने हैं, ठीक है ना? ओके, वो हम करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही इस चैप्टर, बिकॉज आई एम गोइंग टू फॉर्मली एंड दिस चैप्टर विच इज द स्कोप ऑफ इनकम टुडे। That's why I have taken this exercise part so that we can solve the questions of this residential status or यस this scope of income. ठीक है, तो आज हमारी प्रैक्टिस यही रहेगी। जो भी हमारे पास टाइम बचा है अभी, just 43 minutes to be precise are left, and we will make sure कि इस 43 minutes में we'll take the best out of it. The very first thing I'm going to ask the questions, the residential status. We all know the residential status as of now, the scope of income as well, which is the section 5. Do we know? यस सर। यस सर। Yes, sir. And there should not be a single student who can say कि सर मैंने क्लास नहीं ली थी और मुझे नहीं मिली, because they are the number of students I provided the recordings. And the very one important thing I really wanted to talk to you all regarding this. See, whenever you ask the recordings, please select a time, because you people randomly text me about the recording, and sometimes it becomes very difficult for me to do all these things, because I hope you can understand I have a personal life as well, and I cannot do these work um, every single time whenever I open my WhatsApp. एक तो मैं WhatsApp बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, पहली चीज़ ये। और काफ़ी सारे कॉलेजेस के काम भी होते हैं, कुछ फैमिली को टाइम भी देना होता है, खुद पर्सनल भी कुछ टाइम होते हैं। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एकदम ही रिप्लाई मिल जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है? तो आप एक टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, उसमें अगर आप मुझे शेयर करेंगे। हाँ लवन्य बोले। सर आई वाज सेइंग कि मे बी वी कैन कीप अ स्लॉट लाइक कि दोपहर में इतने से इतने बजे बीच में मांग लो, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो। हाँ, आप ऐसा कीजिए, देखिए 5 बजे आप शाम का टाइम रख लीजिए, बिकॉज 5 बजे के बाद फिर मेरी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, तो लाइक मैं आई होप यू कैन सर अंडरस्टैंड, राइट? हाँ दिव्या बोले। सर जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए वो मेरे को भेज दे तो मैं अरेंज करके सारी आईडीज हाँ, आपको एक साथ दैट भेज वुड बी दूंगी। फाइन, दैट्स ग्रेट। आई मीन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, एंड आई डोंट इवन नो, देयर आर जस्ट 2 or 3 स्टूडेंट दोज हुज नंबर्स आर सेव्ड इन माय कॉन्टैक्ट्स। और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी अनरीड पड़े हैं मेरे मैसेजेस, बहुत बार मैं खुद भी ध्यान नहीं देता। तो आप ऐसा कीजिए, दिव्या या खुशी को आप शेयर कर सकते हैं, इन दोनों ओके में से सर। भी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक ही प्लेस पे मैसेजेस होंगे, मैं फटाफट आपको एक्सेस दे दूंगा। इज इट फाइन? यस। यस सर। यस सर। ओके फाइन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर है मेरी? नहीं 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 है। सर अभी नहीं है। नो सर। Just- okay, so we got to know in the last class section 5, and we as of now we are aware of the fact that the residential status has a direct impact on the different incomes. In case if we have the incomes which is so in case if the residential status is different, the tax liability would be different in the previous year. So all I can say, the residential status means section 6 is directly related with the scope of income, which is section 5. Yes or no, class? Yes, yes. यानी सेक्शन 6 ही डिसाइड करेगा कि सेक्शन 5 के कौन से क्लॉजेस या कौन से केसेस अप्लाई होंगे, ये चीज़ की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की प्रीवियस ईयर में, देखिए मैं समराइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है ये।
इन केस ऑफ ROR बताइए, which income is taxable in case of ROR? Indian income and foreign income. Very good. Indian income and foreign income. इंडियन इनकम II प्लस फॉरेन इनकम. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट मीन्स ग्लोबल इनकम. देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टैक्स लगा दीजिए. नाउ द सेकंड केस, in case of NOR, which is non-ordinary resident, Indian income plus Yes, sir. Two cases. टू केसेस के अंदर फॉरेन इनकम. two foreign incomes. Now I'm going to explain these two foreign incomes today, and I'll also tell you the reasons or the rationale behind giving two cases, why these two cases are given as the foreign income taxable in case of NOR and in case of non-resident. In case of non-resident, Only Indian only income. foreign income or Indian? Indian income. इंडियन इनकम. Indian. Very good. Very good. ये हमने अभी तक देखा. Now I'm going to talk about these two foreign cases, two foreign incomes. Taxable in case of NOR. हम उसकी बात कर रहे हैं. आई नो मेरी राइटिंग काफी साफ नहीं आ रही है, बट इट्स रीडेबल राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ आज. First income. For example, there is a business and profession. This business profession is set up in India. Now, when we talk about the business income, first of all, business income, एक business से आपको income हुई. अब business income क्या होता है? Section 28 बताता है कि business income क्या है, which is the charging section of PGPP. वो बाद में देखेंगे. मान लेते हैं कि आपकी कोई business income है, and this business, your business is controlled outside India. बट ये बिजनेस आउटसाइडली कंट्रोल होता है, या तो पार्टली या फिर fully. So the first case, you have a business income and this business is outside India, controlled outside India, partly or fully. And this business income is foreign income. यानी जो business income है ना, इंडिया में इसका सेटअप है भी. फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेटअप इन इंडिया बट पार्टली, नॉट फुली. अगर फुली होगा तो इंडियन इनकम ही बन जाएगी, ध्यान रखना. दिस बिजनेस इज पार्टली सेटअप इन इंडिया, इट मीन्स इट इज ऑल्सो कंट्रोल समवेयर एल्स आउटसाइड इंडिया. यानी कुछ हिस्सा इंडिया में कंट्रोल होता है, कुछ हिस्सा बाहर होता है. एंड दिस इनकम इज एक्रूड, अराइज, received, deemed received, and deemed accrue arise. ये सब कुछ इंडिया से बाहर होता है, आउटसाइड इंडिया. तभी तो फॉरेन इनकम होगी क्लास. यस और नो? Yes, sir. यानी एक ऐसा बिजनेस विच इज सेट अप पार्टली और होली आउटसाइड इंडिया, एंड सिंस इट्स अ फॉरेन इनकम, इट मींस इंडिया में इसमें कुछ भी नहीं हुआ. So such an income is taxable in case of NOR, non-ordinary resident. Non-ordinary resident के केस में. The second case, which is related to profession. Profession वाले केस पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा. Income from a profession, it means income from a profession. सेटअप इंडिया में, सेटअप इंडिया में, यानी देयर इज अ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन व्हिच इज सेटअप इन इंडिया. एंड इसमें कुछ नहीं कहा गया होली और पार्टली. इट मींस सेटअप मींस आइदर होली और पार्टली सेटअप इन इंडिया. कोई प्रोफेशन है, इंडिया में सेटअप है,
and the income is a foreign income. It means this income related to this profession which is set up in India is accrue, arise, received, deemed to received, or deemed to arise outside India. सब कुछ बाहर हुआ है इंडिया से. तो ऐसे केसेस में it is a foreign income in case it is a taxable income in case of NOR. In most of the NOR cases, आपको समझने की जरूरत है ये रूल्स क्यों लाए गए थे. When these rules were inserted for the first time, why these rules, specifically if I talk about the second case, why this rule was inserted. Okay, first of all, we need to understand what does it mean NOR. NOR को हम कह सकते हैं, कैन आई से दिस इन अ लेमन वे, नकली रेजिडेंट है, पूरी तरह से रेजिडेंट नहीं है, इट्स नॉट अ प्योर रेजिडेंट. Yes, sir. जैसे कि देसी घी होता है और एक रिफाइंड घी होता है, राइट. तो देसी घी इज लाइक ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर हम इस वे में देखें. नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज रिफाइंड, है तो ऑयल कैटेगरी में आता है, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट द ओरिजिनल रेजिडेंट. कैन आई से दिस नॉट ओरिजिनल रेजिडेंट. एनओआर को मैं नॉट ओरिजिनल रेजिडेंट कह सकता हूँ. इट मीन्स, समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, he has less stays in India. Can we say this? He has less stay in India. Can I say this, class? Yes, sir. Right. Compared to ordinary resident. ये बात तो clear है. Now, what the government has seen, there are a lot of professionals, those who are there set up business in India, and they are going outside India for in relation to their profession. अपने profession, consultancy related professions. These people are going outside India frequently, and but their profession is set up in India. And they are obviously, if they are going outside India, they are giving their services outside India, they are receiving payments outside India. Whatever income they will receive, that would be the foreign income. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right. If Yes, sir. Mr. X said he's a professional like he's a teacher, for example, but he is not associated with any college, university. He is just giving the lectures, and whatever income he is giving for the guest lecture, this is always a professional income. So teaching is also a profession. Can we say doctor? They are the professions. Advocates, they are also the professionals. The CAs, they are also the professionals. Right. Condition is they are not employed under anyone. ठीक है. तो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स वो बार बार अपने लेक्चर्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज जाते हैं. अब बार बार वो फ्रिक्वेंटली बाहर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इंडिया में उनका स्टे कम होगा. ही विल हैव द लेस स्टे इन इंडिया, तो ही माइट बी एनओआर, राइट. बट his business, his firm is set up in India. तो गवर्नमेंट ने इसलिए इस रूल को बनाया कि दे आर द प्रोफेशनल दोज हु गो आउटसाइड इंडिया, दे अर्न इनकम. अब लेक्चर मैंने अगर फॉर एग्जांपल इफ मिस्टर एक्स is going outside India and he is giving his lecture in Harvard, in Oxford, in other universities, in MIT. If he is giving those lectures outside India, it means the income would arise outside India in those places, and he will receive those payment in that place also. Are you getting my point, class? Yes, sir. Yes, तो sir. इसको रोकने के लिए ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने दो एक्सेप्शन केस लाए. दो एक्सेप्शन केस का मतलब फॉरेन इनकम एनओआर के केसेस में सिर्फ दो केसेस में टैक्सेबल होगी, विच इज फर्स्ट केस बिजनेस एंड द सेकंड केस इज प्रोफेशन. यस क्लास? यस. Yes, sir. Yes, sir. If you have the business income but business is partly or wholly outside India, then it is taxable in case of NOR. If the profession which is set up in India, it means it can partly or wholly set up in India. So the income from that profession, but income obviously income is receiving and accruing outside India, तो foreign income है. तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ foreign business income and foreign professional income, but that profession is set up in India. Those income will be taxable in case of NOR. Yes, class? सर हाँ जी बोलिए. सर तो आपने एक बार बताया था ना कि डबल टैक्स से बचाने के लिए वो एग्रीमेंट होता है, तो जिस उसमें नहीं होगा वहाँ डबल टैक्स देगा. देखो डबल टैक्स तो किसी भी केसेस में हो सकते हैं खुशी. सुन समझ नहीं आ रहा है. डबल केसेस तो बच्चे किसी भी केस में हो सकते हैं. डबल केस तो इन केस इफ यू आर दी ओआर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, राइट. आपने फॉरेन इनकम आपने अर्न किया तो इंडिया में तो फिर भी टैक्स देना पड़ेगा ना खुशी. तो सर एग्रीमेंट हमारा क्यों बना हुआ है वो?
वो वो क्या एग्रीमेंट चीज इसलिए है? बनाया हुआ है, देखो इसको ऐसे समझते हैं। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस ओके फाइन, ठीक है। अब एक दूसरा केस देख सर लेते ये हैं। बिजनेस इनकम दोबारा बता दो। बिजनेस इनकम क्या क्या बताऊँ इसमें, सर बताइए। अगर ये होली आउटसाइड इंडिया है तो ये, बिजनेस, यस सर, मान लीजिए तो आपका फिर ये बिजनेस, इंडिया में क्यों होएगा टैक्सेबल? वो इसलिए इंडिया में टैक्सेबल होगा बिकॉज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनओआर, if the business is outside wholly, sorry, it's outside partly and wholly ना, ठीक है ठीक है। if the business in case of NOR it is set up outside India, देखो इस केस में क्या था, इस केस का रैशनली most of the business they were set up in the tax havens। टैक्स हेवंस में उन बिजनेस को दिखाएगी ये कंपनी यहाँ से शुरू होती है, right? It was earlier a very frequent practices. So what business used to do, they used to start their company, they used to show their companies in Cayman Island, for example, जिन्हें shell companies कहा जाता है. They used to start their company in the Virgin, England, Cayman Island, or other tax havens, Panama, right? In countries में what they used to do, they used to set up the companies. वो एक तरह से बिजनेस इनकम इंडिया की है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अच्छा मैं आपको इसको डिटेल में ही बता देता हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल टेक्स हो जाएगा बट इट्स ओके। शैल आई रिमूव दिस स्क्रीन? यस सर। फॉर एग्जांपल नाउ लुक एट दिस, एक कंपनी है इंडिया में एंड देयर इज अनदर कंपनी व्हिच इज आउटसाइड इंडिया। नाउ लुक एट दिस कंपनी, and the company which is in India, for example, and it's a business income, they have the business income, they have some income. So if they have the business income, if they show that they have the income from in their Indian business, they'll have to pay taxes in India। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, yes? नो सर। Okay. But what happens in order to evade the tax liabilities, this company what they done? They shows that they started a company, a shell company basically, shell company. They started a shell company which is on paper only in Panama Island। Panama Island। ये ऐसी कंट्री है जो टैक्स हेवन है, इन्हें टैक्स हेवंस कहा जाता है, यानी दीज आर द कंट्रीज they do not charge very high taxes। I mean, what they used to do, this company, what they will transfer their money, they will transfer some part of their Indian money to Panama, ठीक है? और वहां पे उन्होंने कंपनी, न्यू कंपनी स्टैब्लिश कर ली, और ये बेसिकली पनामा में कोई बिजनेस नहीं है, ध्यान रखना पनामा में, बट दे आर शोइंग दे आर अ वेरी हाई इनकम फ्रॉम द पनामा बिजनेस। नाउ in Panama tax rates are zero, only there are some fees only, tax rates are zero, in India tax rate are 30% for example, and if they have transferred 60% of their income to Panama, what will happen? They are not obliged to pay any taxes in Panama, yes or no, or on 60% of the income, यस सर। right? तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, बिजनेस दिखाया तो ये गया कि आउटसाइड इंडिया है, लाइक समझ आया, बिजनेस is set up outside India, but देखा जाए in most of the cases what earlier used to happen, most of the NOR, non-ordinary resident companies, or in case of not companies, basically in case of individuals, they used to set up their company in a such a way that they are having the incomes, or the individual also. Panama Papers, I don't know how many of you have heard about the Panama Papers case, इसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज का नाम भी आया था, अमिताभ बच्चन वाज वन ऑफ, देयर वर लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस। वो क्या कर रहे थे, अपनी शेल कंपनीज स्टार्ट कर रहे थे, आई मीन एज अ एक्यूज ऑब्वियसली दे आर नॉट कल्प्रिट, दे इट इज नॉट कन्विक्शन एज ऑफ नाउ, बट क्या केसेस है कि काफी सारे लोगों ने अपने बिजनेस को वहां पे शिफ्ट कर लिया, ये दिखाया कि उनकी कोई कंपनी है वहां पे काम करती है, राइट, एंड दे हैव देयर बिजनेस इन पनामा, ठीक है? तो ऐसे केसेस में उन्होंने अपनी 60% इनकम कहाँ ट्रांसफर कर दी, दूसरी कंट्रीज में। इंडिया में 30% टैक्स रेट है, दूसरी कंट्रीज में 0% टैक्स रेट है, तो ऑब्वियसली वहां पे द एंटायर 60% इनकम विल बी टैक्स फ्री, यस और नो? यस सर। तो कुछ केसेस में इस ऑल्दो इट इज वेरी प्रेवलेंट, अभी भी काफी होता है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, आई होप यू ऑल नो द मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस। तो इस केस में what the tax department try to stop the leakage of these tax evasion, they said in case of NOR, non-ordinary resident,
if business is outside India, which is set up either partly in India or wholly outside India. So in such a situation, such business, these income will be taxable in India. So in order to stop these leakages, they have inserted this rule. For example, OR के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. In case of ordinary resident, अगर ऐसा कोई केस होता भी है तो सारे का सारा इंडिया में टैक्सेबल तो होगा ना. In case if they have the foreign income, yes or no, class? Yes, sir. Right. So Indian income as well as their foreign income. This was a main problem in case of NOR. And there was a case actually. I was reading one of the article last year. What was the earlier practice in the 1990s or late 90s? Most of the people, they used to frequently change their locations in order not to be the ordinary resident. वो इंडिया में स्टे इतना करते ही नहीं थे जिससे कि वो इंडिया की ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बने, क्योंकि इंडिया में दैट टाइम द टैक्स रेट्स वर सो हाई. So what they used to do, they used to visit India for a very less time, and they used to go to outside India for a longer time, so that they can escape the tax liability in India on their foreign income. समझ आ रहा है आपको? I hope you can relate with it. What I'm trying to convey now. ठीक है? Yes, sir. तो इस वजह से ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तो इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, तो वहां पे तो स्कोप काफी नैरो डाउन हो जाता है. बट इन केस ऑफ एनओआर इज अ ग्रे एरिया ना. वो एनओआर का मतलब इंडिया में कम रहा है. अब इंडिया में कम रहने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? देयर आर द नंबर ऑफ रीजन दैट व्हाई ही इज हैविंग द लेस स्टे इन इंडिया. ठीक है? That's why in order to stop these leakages, tax leakages or tax evasion, the government has inserted that there are two exception incomes, foreign income 1 and foreign income 2, which is the professional income. If they have these incomes, it will be taxable in India. समझ आया? Yes, class? Yes, sir. Okay. Although I didn't want to have this discussion now because ये tax havens का part है. ये आप पढ़ेंगे एमकॉम लेवल पर या मास्टर्स लेवल में. अगर आप एमकॉम वो भी ड्यू से करते हैं तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है टैक्सेशन का, एडवांस टैक्सेस का. तो यू विल सी ऑल दीज थिंग्स देयर. ओके. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलिए. सर सांची की ना क्लास लीव हो गई अभी. ओके. वापस एंट्री ले रही है अभी. मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आऊँ वापस. हाँ ठीक. देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओह आई डिनाइड. सॉरी. प्लीज आस्क देम टू जॉइन अगेन. मैंने गलती से डिनाई कर दिया. हाँ सर बोलती हूँ. हाँ ठीक है. ओके. तो अच्छा खुशी आप कुछ पूछ रहे थे राइट? यस सर. अच्छा ये डाउट आप में से काफी लोगों का होगा जो खुशी का डाउट था. खुशी कैन यू रिपीट योर डाउट? सर डाउट ये था कि आपने बताया था ना कि एग्रीमेंट होते हैं वो डबल टैक्सेशन वाले, और अगर हम नॉर्मल देखें तो डबल टैक्स हमें देना ही होता है ऑलमोस्ट, मतलब जब भी अगर फॉरेन इनकम होगी और इंडियन इनकम भी है तो फिर ऐसे में वो एग्रीमेंट मतलब कहाँ काम आता है, क्या यूज क्या है? वही मैं बता रहा हूँ. सी ये इंडिया है एंड दिस इज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. सर सॉरी टू इंटरप्ट. हाँ जी बोलिए. सर उन्होंने रिक्वेस्ट वापस भेज दी है. ओके. थैंक यू सर. ओके. So India. Okay. So for example, there's Mr. X. He has Indian income. From Indian sources. It means accrued within this boundary. ये तो मतलब वो है receive within this boundary. It is an Indian income. And he is ordinary resident. 16 lakh. Will it be taxable in India? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, see Mr. X, he has other incomes. For example, he has other incomes, let's say 8 lakh from rest of world. Now, what about this 8 lakh? Would it be taxable in India? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. 8 lakh. And now, why it is taxable in India? Because India
tax savers, it's most of the income on the basis of residential status. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. He might be, Mr. X, he might be the citizen of other country. He might be. Okay. Now, from this country, for example, this is the XYZ country. I'm not specifying the names because I don't know their taxation incidents. So I'm quoting this country as XYZ. XYZ में क्या होता है? XYZ में ना रेजिडेंशियल स्टेटस से टैक्स नहीं लगता, मान लेते हैं XYZ में लगता है सिटीजनशिप बेस पर, यानी कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, आप सिटीजन हमारे देश के हैं तो हम आपसे पे टैक्स लेंगे. इज दैट क्लियर टू अस? Yes, sir. तो आप बताइए, मिस्टर एक्स हु इज अ सिटीजन ऑफ XYZ is paying tax in India because he is ordinary resident of India in the last year. इंडिया में तो पे करना ही पड़ेगा उसे, ठीक है? तो इंडिया में उसे कितनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा? 16 लाख प्लस 8 लाख. यस और नो? Yes, sir. Okay. 24. And XYZ says, since Mr. X, he is the citizen of XYZ, for example, अब मिस्टर ये कंट्री कहती है देखो आप हमारे यहाँ के निवासी हो, हमारे यहाँ के नागरिक हो, निवासी नहीं नागरिक हो, इट मीन्स यू आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, इट मीन्स यू आर लायबल टू पे टैक्सेस ऑन योर एंटायर इनकम इन आवर कंट्री. 8 लाख पे भी जो आपने हमारे यहाँ से अर्न किया, 16 लाख पे भी जो आपने इंडिया से अर्न किया. हो सकता है ना ऐसा? पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि दे आर द कंट्री, दे आर द नंबर ऑफ कंट्रीज, they have the different incident of taxes. They are the countries which impose taxes on the citizenship as well as the residential status. They are the countries which impose the taxes on the basis of residential status like India. Right? India में भी residential status citizenship पे भी थोड़ा थोड़ा exception cases में लगाया जाता है. Right? Now look at this. How you can understand this problem. He is paying the taxes in these two different countries. Yes or no, class? ये पता लग रहा है ना, एक कंट्री के हिसाब से रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से एंड द अदर इन अदर कंट्री ही इज पेइंग टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप. दिस इज द प्रॉब्लम डबल टैक्सेशन एंड इट इज अ वेरी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम. यानी द पर्सन दोज आर हैविंग इनकम फ्रॉम अदर कंट्रीज उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसे कहा जाता है डबल टैक्सेशन. नाउ नो वन वांट्स दिस डबल टैक्सेशन. सो व्हाट द कंट्रीज do on their part, what they do, they may have the agreement. India and this XYZ, they may have the agreement. ये कह रहे हैं कि यार मिस्टर एक्स के साथ ना बहुत गलत हुआ, मिस्टर एक्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया हम लोगों ने, 24 लाख का मैंने पे लगाया, आपने भी 24 लाख का लगाया. तो उन्होंने कहा कि ऐसा अरेंजमेंट कर लेते हैं ना कि मिस्टर एक्स को एक ही जगह टैक्स पे करना पड़े या पार्शली इंडिया में और पार्शली XYZ में टैक्स पे करना पड़े. That's why this is DTAA, which is Double Taxation Avoidance Agreement. इसमें मेनली सेक्शन 90, सेक्शन 91 पढ़ा जाता है इनकम टैक्स का, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकता, और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी बहुत ज़्यादा I mean, if I have to teach you and I have to revise them, but I won't teach you because they are not the part of your syllabus as of now. ठीक है, पहले आप इंडिया का टैक्सेशन पढ़ लीजिए. तो इस केस में क्या होगा, मैं से इसको कुछ एग्जेम्पशंस दी जाएंगी, कुछ एग्जेम्पशंस दी जाएगी अंडर सेक्शन 90 एंड 91, एंड ऑन बेस्ड ऑन दोज एग्जेम्पशंस उनकी टैक्स लायबिलिटी जो ज्यादा आती, डबल आती, वो अब कम आएगी. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What I know, India has this double taxation avoidance agreement in major 80 countries, in major 80 plus countries. और इसके कुछ दूसरे केसेस भी हैं. What if the double taxation agreement is not there? What about other 200 plus countries जिनके साथ आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है? उनके लिए फिर अलग सेक्शन यूज होता है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट अलग से एग्जेम्पशन देती है. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो खुशी जी आपको क्लियर है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था? जी सर. अच्छा, it is 16 minutes left, 16-15 minutes left ना? एक सेकेंड. अच्छा, isn't it looking beautiful? This picture, what is it?
Saturn. Saturn. Okay, good. Very good. Yes, it is. And it is a ring. And this Saturn is the only Saturn and Jupiter. They are the two planet which saves us from all the debris and all this asteroids and all. पता होगा आप लोगों को कॉमेट से. Anyways, okay. तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं. यस क्लास. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एक सेकेंड. So they are the questions, and you people may answer these questions if you want. So don't worry, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ. आप लोग की इच्छा है, आप आंसर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. मैं कुछ स्टेटमेंट पढ़ूंगा और आपको बताना है, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट्स एंड जो भी आंसर करेगा प्लीज स्पेसिफाई योर नेम फर्स्ट, ठीक है. नाउ द Okay, sir. फर्स्ट, rental income of rupees 36,000 is received in India on May 10th, 2018. Will it be taxable in the previous year in case of ROR, in case of NOR, in case of NR? बताइए. Rental income received of rupees 36,000 in India on May 10th, 2018. Will it be taxable? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. In all three cases? Yes, Sir, sir. because it is Yes, Indian sir. income. Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. इंडियन इनकम है. हाँ, क्योंकि ये इंडियन इनकम है. वेरी गुड. ये इंडियन इनकम है क्योंकि सबसे पहले आपको यही पहचानना है वेदर इट इज इंडियन इनकम और नॉट. यस, अगर इंडिया में रिसीव हुई है तो इंडियन इनकम है, कोई और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. उसे बाद में कहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है, पैदा आई मीन कहाँ जनरेट हुई थी इनकम, the place where this income was arise in accrue doesn't matter at all. If it is was received in India, it is the Indian income. But answer is this. Any idea? क्यों ऐसा सर किया? प्रीवियस ईयर कौन सा है उस पर डिपेंड करता है. वेरी गुड. देखो मेरा In क्वेश्चन ये था कि इंडियन इनकम 2009. रिसीव. वेरी गुड. गुड. ये 2018-19 में तो टैक्सेबल होगी इन दी असेसमेंट ईयर, बट इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन आवर प्रीवियस ईयर. यस और नो? क्योंकि ये इनकम रिसीव कब हुई, आपने डेट शायद सुनी नहीं थी, विच वॉज May 10, 2018. अगर May 10, 2018 में रिसीव हुई है तो उसके नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल हो गई होगी ऑटोमेटिकली. यस और नो? यस और नो क्लास? Yes, sir. Yes, sir. अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप हमें तो हमेशा प्रीवियस ईयर की बात होगी. ऐसा नहीं है. एग्जामिनेशन में व्हाट दे डू, दे ट्विक द क्वेश्चन, दे आस्क द इनकम ऑफ टू प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 2 साल पहले की प्रीवियस ईयर से. वो पूछते हैं कि इस पर अब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी. आंसर इज नो. बट व्हाट स्टूडेंट डू, दे जस्ट लुक एट द इंडियन इनकम और वो फिर हर किसी पे राइट कर देते हैं दे आर द इंडियन इनकम, दैट्स व्हाई इट इज द टैक्सेबल इन ऑल केसेस. नो, इट इज इंडियन इनकम बट related to, but not related to previous year, but not related to relevant previous year. Yes or no class? That's why it is not taxable in assessment year. Okay? Yes class? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Next. Interest income of rupees 46,000 accrues in Bhavnagar on March 31st, 2020. Okay, I'm repeating this question. Interest income of rupees 46,000 accrues in Bhavnagar on March 31st, 2020. But it is received in Berlin. But it is received in Berlin. बताइए. So it is Indian income. Taxable in Okay. Indian income. Taxable Okay. in all three cases. क्यों Or इंडियन इनकम में है? So so because because it is accrued in India. I'm Okay. assuming Bhavnagar is in India. वेरी गुड. yes, यस, हम ये मान रहे हैं कि भावनगर इंडिया में है क्योंकि ऐसा कोई नगर वगर तो और कहीं नहीं मिलेगा हमें नेपाल के अलावा. But we are considering Bhavnagar is in India and income was considered in Berlin.
So it doesn't matter whether where you received. If it is accrue and arise in India, it means it is Indian income. So it is taxable in all three cases. Yes. Yes, sir. Yes. Good, very good. Now third case. एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बोलें. सर दीपिका की मीटिंग लीव हो गई है गलती से उसको ऐड कर लीजिए ओके एक सेकेंड. मैंने चेंज कर दिया ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे आज. ये ओके 46,000 ये हो गया केस. थर्ड केस, रेंटल इनकम और सैलरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम, इसमें से कोई भी एक इनकम है. 86,000 is received outside India. 86,000 received outside India in the previous year, in the relevant previous year. And at the same time, it accrues in London, right? So I'm repeating the question. Rental income of rupees 86,000 received outside India in the previous year, relevant previous year, and at the same time, it accrues in London and 40,000 rupees, sorry, 45,000 rupees is transfer transferred by Mr. X in Chennai in the previous year. क्वेश्चन समझ आया? 80,000 आ गया सर. outside आ India. गया सर. 80,000 London accrue and receive, and of which 45,000 is remitted or transferred later on in Chennai. फैमिली रहती होगी, चेन्नई में ट्रांसफर कर दिए. अब बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इनकम? फर्स्ट ऑफ ऑल Foreign income. Foreign Foreign income. foreign income. 45,000 तो इंडियन इनकम माननी चाहिए. यस. Yes. No नहीं sir. sir. No sir. No The sir. ट्रांसफर हो रहा है. तो फर्स्ट सीजन वाला माना जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड. रिसीव्ड के बारे में हमने बात की थी. फर्स्ट टाइम जो कंट्रोल में इनकम आती है, if it is remitted somewhere else, it doesn't matter at all. The entire income is considered a foreign income. The nature of this income is foreign income. बताइए. फर्स्ट केस टैक्सेबल होगा. Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. सेकंड केस, No sir. No No, sir. sir. थर्ड केस, No, sir. गुड, वेरी गुड. फोर्थ केस देखते हैं. Gift of rupees 2 lakh. Gift of rupees 2 lakh received outside India. Gift of rupees 2 lakh received outside India by an individual on November 6, 2020. On November 6, 2020. बताइए. गिफ्ट ऑफ रुपीज 2 लाख. सर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिए एक बार. यस, ओके. गिफ्ट ऑफ रुपीज 2 लाख रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ एक इंडिविजुअल के थ्रू, यानी एक इंडिविजुअल ने रिसीव किया. फॉरेन इनकम हो गया. ओके. ऑन November 17, 2020. Yes. Is it a foreign income? Yes sir. Okay. Is it a foreign income, everyone? ये इनकम ही नहीं है. Yes sir. Okay. इंडियन. अब ये भी बात ठीक है भाई, ये इनकम ही नहीं है. किसने कहा ये इनकम नहीं है? सर मी इब्तिसाम. ओके. इब्तिसाम, ये इनकम है या नहीं वो डिपेंड करता है केसेस के ऊपर. बट I can tell you, if I have to tell you in a very quick word, it is the income. Why it is the income? ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है एज पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पार्ट, अगर आपको कोई गिफ्ट मिला और गिफ्ट की वैल्यू पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा है इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, तो आपका जो गिफ्ट है ना, पूरा का पूरा गिफ्ट, मान लीजिए आपको गिफ्ट मिला इप्सम 80,000 का एक गिफ्ट, 80,000 वर्थ ऑफ रुपीज गिफ्ट. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट. Basically, the value of this gift is more than 50,000. Therefore, the entire 80,000 rupees, not 30,000, entire 80,000 rupees will be taxable.
ये आपकी इनकम मान लिया जाएगा एप्सम, समझ आया? ओके सर। अच्छा, अगर यही गिफ्ट एप्सम पे एग्जाम्पल सूट नहीं करेगा, फॉर एग्जाम्पल मी, अगर यही गिफ्ट मुझे 80,000 का मेरी शादी में मिले तो क्या होगा? क्या टैक्सेबल होगा? नो सर। नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, अगर ये गिफ्ट मेरा मुझे अपनी सेकंड मैरिज में मिले, फर्स्ट में नहीं सेकंड पे, यानी माय फर्स्ट मैरिज वाज नॉट सक्सेसफुल एंड आई एम नाउ रीमैरिंग अगेन, नाउ टेल मी, विल इट बी टैक्सेबल? यस सर। इट विल बी टैक्सेबल, यस। तो ये कुछ केसेस हैं। अब देखो, इसको आप वो मत ले लेना कि मतलब ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि गिफ्ट्स के केसेस में इस तरह से हम चीजें देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, ठीक है? अब गिफ्ट का नेचर अलग हो सकता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा जब हम सैलरी चैप्टर करेंगे। तो अभी के लिए आपको समझ आया, गिफ्ट इज ऑल्सो टैक्सेबल if it is the aggregate values of the gift in a previous year does not exceed rupees 50,000, it is exempted. But if it is more than 50,000, the entire value is aggregate value is taxable in the previous year. ठीक है क्लास? ओके Everyone? सर। हाँ, तो मुझे ये लग ही रहा था कि आपको गिफ्ट में थोड़ा कंफ्यूजन होगी। Here. So gift of rupees 2 lakh received outside India by an individual on November 17, 2020. It is, अब आप बोलेंगे सर एक्रू एंड राइज तो नहीं हो भाई, गिफ्ट आप एक्रू थोड़ी राइज थोड़ी करते हैं, गिफ्ट को आप कमाते थोड़ी हैं, यस सर। राइट? तो उसके एक्रू एंड राइज होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम उसे सिर्फ किस बेस पे देखेंगे? रिसीवेबल बेसिस पे देखेंगे। इफ इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इट मींस इट इज फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम। टैक्सेबल, टैक्सेबल, नो, सही लिखा है मैंने? नो सर। सर Why एनओआर in में the नहीं case होगा। of Innova? सर एनओआर के केस में। वेरी गुड, आप सही है। नो नो सर। नो नो सर, सर, नो एन आर एनआर में में नॉन भी नहीं नो होगा। रेजिडेंट। सर, एन आर में भी नो। एनआर में भी वेरी नो। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं और हम कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। यस, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, बिजनेस इनकम स्लैश प्रोफेशनल इनकम। देखो, बिजनेस इनकम एंड प्रोफेशनल इनकम सुनते ही आपको एनओआर पे ध्यान देना होगा, ठीक है, हमेशा। बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम ऑफ रुपीज 76,000 इज रिसीव्ड and accrued outside India. It means it's a foreign business income or foreign professional income. Yes or no? यस सर। यस सर। During the previous year, business is controlled from outside India or profession is set up outside India. यानी बिजनेस भी बाहर है और प्रोफेशन भी बाहर है, ठीक है? तो अब आपको बताना है फिफ्थ केस। ये है, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, इट इज प्रोफेशनल इनकम ओनली विच इज रिसीव्ड and ACC mean accrued outside India. So professional income but received and accrued outside India, and as well as this profession is fully outside India. outside India, सब कुछ आउटसाइड है, प्रोफेशन भी आउटसाइड है, रिसीव एंड एक्रू भी आउटसाइड है। क्या है ये सिर्फ फॉरेन इनकम, ये तो क्लियर है, ये सिर्फ फॉरेन यस इनकम। सर। यस सर। यस यस सर। सर। बट it should be the case, right? यस यस सर। सर। यस सर। Very good. No, sir. In case of सर Innova, it's एनओआर not केस taxable. में टैक्सेबल होगा। ऑब्वियसली, मैंने क्या बताया, इट्स ए स्पेशल केस। स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि प्रोफेशन है, फर्स्ट थिंग, इट्स अ प्रोफेशन एंड दिस इज फॉरेन प्रोफेशनल इनकम एंड दिस प्रोफेशन इज नॉट सेट अप इंडिया, नॉट सेट अप इन इंडिया, राइट? तो इस केस में दिस विल बी टर्म्ड एज द फॉरेन इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल इन दिस केस। समझ आया? बट सर यू टोल्ड अस दैट सर इट आपने इज कहा था कि इनकम फ्रॉम इनकम प्रोफेशन सेटअप इन सेटअप इंडिया। इन इंडिया होना चाहिए। या यू टोल्ड अस दैट मैंने इंडिया कहा था, सेटअप। एक सेटअप इन सेकंड, इंडिया। सेटअप इंडिया में होना चाहिए। एक सेकंड, लेट मी सी, मैंने सेटअप इंडिया कहा था, इनकम प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया। ओके, अरे हाँ सॉरी, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है, एक एक मिनट। वो प्रोफेशन में बिजनेस भी था ना,
इट्स अ बिजनेस. अब ठीक है, बिजनेस बिजनेस. Yes, sir. Yes, sir. Right. ओके, मैंने क्वेश्चन में बिजनेस प्रोफेशन के केस में इट इज सेटअप. ठीक है, राइट. नाउ ओके, इन सिचुएशन 5 यानी सॉरी मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. In this situation, if I tweak this question, if I say, suppose this business, suppose this profession is set up in India. ये वाला केस हमने देखा. But suppose this profession is set up outside India, and then what will happen? सर एनओआर में नहीं होगा. नहीं होगा, right? तो इस क्वेश्चन में बस यही एक ट्विक था और आई होप आपको समझ आया होगा what I was trying to convey here. ठीक है, तो यानी कि आपको दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, विच इज फर्स्ट अगर बिजनेस का केस हो और प्रोफेशन का, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. यानी कि ये हो सकता है कि एनओआर के केस में इनकम हो, एंड दिस बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम शुड बी फॉरेन इनकम, शुड बी फॉरेन इनकम. यानी दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई. इट्स अ बिजनेस इनकम एंड बिजनेस, इट्स अ प्रोफेशनल इनकम बट फॉरेन इनकम. थर्ड केस, बिजनेस सेटअप outside India, and it could be fully or partly. Right. And in case of this profession, it must be set up in India. in India. अब देखो सेटअप इन इंडिया के केस में it could be fully set up as well as it can be partly set up. Both cases will apply. Both cases. तो इन cases में NOR will have to pay taxes in India. Yes, class? Yes, everyone? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, fine, good. sir. 12:30 क्लास है. अच्छा ठीक है, हाँ मैंने भी टाइम देख लिया. इट्स 12:33, राइट? ओके फाइन, कोई बात नहीं. तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट टैक्सेबिलिटी में? एनी डाउट इन टैक्सेबिलिटी पार्ट? यस, एनी वन ऑफ यू? एनी डाउट? No, sir. अच्छी से हाँ जी बोलिए. यस, सर आपने बताया था जो टैक्सेबल इनकम होगी वो मोर देन 2,50,000 पे होगी, बट अभी आप तो लाइक एग्जांपल्स तो दे रहे हैं उसमें तो वो अमाउंट कम है, तो वो टैक्सेबल क्यों होगी ये डाउट है. मैंने फिर उस टर्म में बात ही नहीं की ना निशा. what I just said कि it will be taxable. Yes निशा? यस सर. राइट, इट विल बी टेक्सेबल. आप अच्छा बताइए निशा, अच्छा आप कुछ अर्न करते हैं? आई मीन डू यू प्रोवाइड एनी कोचिंग और एनीथिंग? नो. मान लेते हैं निशा एक कोचिंग प्रोवाइड करती हैं एंड शी इज अर्निंग फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, अभी के हिसाब से मान लेते हैं इट्स रीजनेबल. ठीक है, अच्छा अमाउंट है 10,000. तो निशा आप बताइए 10,000 टैक्सेबल है या नहीं है? नो सर. क्यों नहीं है? सर ना ही ये लाइक आपने बताया था जो टीडीएस करता है वो मैं पहली उसकी बात. बात नहीं कर रहा निशा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप 10,000 आप ना अपनी जेब में रख लेते हैं, कोई टीडीएस नहीं करता, आप कैश में सारी फीस लेते हैं. ठीक है निशा? यस सर. आप बताइए कि क्या ये टैक्सेबल है या नहीं है? नो सर नहीं है. देखो, देयर आर टू थिंग्स. टैक्सेबल है इज अ डिफरेंट थिंग, उस पर टैक्स लगेगा इज अ डिफरेंट थिंग. समझ आ रहा है? When I say it's taxable, it means I am referring a special income which is known as gross total income. जिस इनकम पे टैक्स लगता है which is known as net total income. निशा? Yes? हाँ, तो निशा जो आपने 10,000 पर मंथ अर्न किया यानी 1,20,000, इस पे टैक्स लग सकता है. इट इज अ टैक्सेबल इनकम. यस निशा? यस सर. अब मैं देखूंगा कि मेरी स्लैब्स क्या है विच इज 2.5 लाख, टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज इट इज नॉट द नॉट टैक्सेबल इनकम. समझ आया निशा? जी सर. ठीक है, तो कभी भी, क्योंकि अगला डिस्कशन हमारा यही होने वाला है. बट निशा, आपने एक शेयर बाय किया और आपने एक शेयर पर फॉर एग्जाम्पल यू हैव बॉट द HDFC शेयर एंड HDFC का शेयर आपने 1,500 में बाय किया था. इट इज नाउ डेज इट इज ऑलमोस्ट 1,600.
आपने 1600 में बेच दिया, आपके पास 100 रुपये है निशा। Yes, आप sir. बताइए, इज इट टैक्सेबल? Sir, doubt है या नहीं है? नहीं, टैक्सेबल तो है निशा, टैक्सेबल तो है, ठीक है। जी। हाँ, फिलहाल मान लीजिए आप मेरी बात, टैक्सेबल है, ठीक। Okay, sir. और सेकंड थिंग इज ये, अच्छा जी की क्लास, बस इनका निशा का क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं, क्या इस पे टैक्स लगेगा अभी निशा? सर एक सेकेंड सर, हाँ। मैंने स्टार्टिंग में अटेंडेंस ले लिया था, स्क्रीनशॉट आपने कहा था तो। ओके, अटेंडेंस हो गई है ना? हाँ that's मैंने good. ले लिया तो वही ठीक है। पूछ रहे थे। हाँ, तो निशा, ये जो आपने जो आपको 100 रुपीज जो मिले हैं ना, Yes, sir. आप बताइए क्या इस पे टैक्स लगेगा इस 100 रुपीज पर? Yes, sir. मैंने earn किया है तो लगना तो चाहिए। ओके, लेकिन आपकी लिमिट तो 2.5 लाख है। Yes, sir. ये भी कंडीशन है। हाँ, तो बताइए टैक्स लगेगा? सर आप कंफ्यूज कर रहे हो। ओके, ठीक है। तो ये सारे जो जवाब हैं, ये सस्पेंस मूवी की तरह मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये सारे जवाब हमें नेक्स्ट क्लास में मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। किस तरह की Okay, sir. इनकम टैक्स टैक्स लगता है और किस रेट से लगता है, तो वी विल स्टार्ट आवर टैक्स रेट्स फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेक्स्ट class because we have a next college meeting tomorrow, but I don't want to miss your class, so I will try to make arrangement in a way that I can take your class from the college, or I can come to the home, then I'll take your class, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. Okay, okay, fine. Thank you so much, you all. You may leave now. Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.